Hello everyone, welcome back to Nucleotides Biology Discuss. Today we have to continue our paper, that is your genetics, and this is your lecture number 36. Okay, so आज हम discussion करना another topic, that is detection of the mutation by a method, that is your ClB method. Okay, mutation बाबद रे हमें already lecture complete करी सारी छू. Mutation काना जे there will be sudden inheritable changes in case of your living organism, that is called as your mutation. जदि हमर डीएनए रे चेंजेस हला, जीन रे चेंजेस हला, क्रोमोसोम रे चेंजेस हला, केनसी भी स्ट्रक्चर रे जदि हमर जेनेटिक मटेरियल रो चेंजेस हला, सेटा की कहसो हमें काम लिकरी म्यूटेशन बोली करी कहसो. बट हाउ कैन वी डिटेक्ट जे गोटे पर्टिकुलर इंडिविजुअल रे म्यूटेशन हेचे कि नाही? ओके, ताकि हमें डिटेक्ट करबार लागि जेन मेथड गोटे यूज करा जेसे, वन ऑफ दैट मेथड दैट इज ClB method. Okay, so ClB method is a method to detect your mutation. Okay, so amar aji topic ro discussion karwar ache detection of mutation. Detection of mutation. Okay, but this mutation ro detection karma by ClB method. काना से ClB मेथड डिस्कशन करबार आगरु फर्स्ट हमको जन तीनटा लेटर आसला C, L and B, इटा फर्स्ट हमको जानबार जरूरी है. C माने काना, L माने काना, B माने काना. ओके, तापर हमें भीतर के ढुकमा एंटर करमा. C माने काना देखो, हियर C कैपिटल C है, राइट. सीरो मान हला, दिस इज ए जीन दैट इज क्रॉसिंग ओवर सप्रेसर जीन. क्रॉसिंग ओवर सप्रेसर जीन. ओके, सीरो मान हला क्रॉसिंग ओवर सप्रेसर जीन. हमको इनो तीनटा जीन रो बाबद रे पहला जानबार अछि, C जीन, L जीन और B जीन काना. The first one hela, that is your crossing over suppressor gene. C mane hela crossing over suppressor gene. This is a dominant gene. It is a can gene hai. This is a dominant gene hai. सेतिर लगी कैपिटल C लिखी जा, right? And इतर काम करना जे C gene that will suppress the crossing over or it do not allow the crossing over. यदि C gene हमें नेला तो गोटे क्रोमोसोम रे यदि C gene अच्छे, then that chromosome will not go for the crossing over. That means it is suppressing the crossing over. That's why that is called as your crossing over suppressor gene. Crossing over suppressor gene माने काना, जो crossing over suppressor gene will suppress the crossing over. Suppress माने काना, do not allow, right? So crossing over suppressor gene, it do not allow the crossing over. It do not allow the crossing over. Crossing over allow नहीं करे. यदि crossing over allow नहीं कला, तो मोर जन gametes formation हवा, that will be the parental type रो gamete formation हवा, right? उड़े parent रो जितना बले gamete formation होचे, यदि crossing over होतुबा, बेला मोर genetic material रो exchange हबार chances होचे, chromosomal segment रो exchange हबार chances होचे. बट यदि क्रॉसिंग ओवर नहीं हबार तो पेरेंट पाखे जेन क्रोमोसोम अछि जस्ट सेपरेट हे जिबा एंड पेरेंट रही क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन ने के ट्रांसफर हे जिबा. ओके, तो क्रॉसिंग ओवर सप्रेसर जीन काना करू छे, दैट विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पेरेंटल टाइप ऑफ गैमेट्स. Parental type of gamete. Okay, तो parental gametes formation हबा, right? C माने हला crossing over suppressor gene, मानो रहला. Next हला हमर काना, that is your L gene. Next हला L gene. Okay, L gene, this is L मान हला lethal gene.
L रो माने हला लिथाल जीन, राइट. लिथाल जीन माने काना, we know that lethality हमें already discussion करी सारी छु. लिथाल जीन माने काना, the gene which may leads to death of the individual. किछटा जीन रो combination जदि death leads करूचे, जदि गोटे particular individual रो death रो लागि responsible होचे, तो ताके कहसु हमें काम बोली करी लिथाल जीन बोली करी कहसु. Okay, so lethal gene, that is a gene, this gene leads to death of the individual. This gene will leads to death of the individual. Death of the individual. Right? And this is a recessive gene. This is a recessive gene. But ये केंता gene है कहला? Recessive gene है. Recessive gene माने कना? जे recessive gene that will only express in homozygous condition. जानी छो मैं? The recessive gene केन condition रे express है? Homozygous condition रे खाली express है. माने small l थिला जाए करी express होगा. Right? So it will only express in homozygous condition. Okay, homozygous condition रे express है पारे, माने दुही क्रोमोसोम रे स्मॉल एल थिबा और हेमीजाइगस कंडीशन रे एक्सप्रेस है पारे, और हेमीजाइगस कंडीशन रे एक्सप्रेस है पारे. हेमीजाइगस हमें पढ़ी देला हाफ जाइगस. सपोज इटा मोर गोटे एक्स क्रोमोसोम हला एंड इटा हला मोर अनदर एक्स क्रोमोसोम, एंड एक्स क्रोमोसोम रे सपोज इन स्मॉल एल जीन अच्छे एंड दिस इज आल्सो स्मॉल एल जीन अच्छे, तो इटा के कहला होमोजाइगस कंडीशन. इटा के कहला होमोजाइगस कंडीशन, राइट. बट हमर पाखे जदी गोटे एक्स क्रोमोसोम और गोटे वाई क्रोमोसोम अच्छे, इटा एक्स क्रोमोसोम हला एंड सपोज दिस वन दैट इज योर वाई क्रोमोसोम हला, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम अच्छे. बट हियर एल जीन प्रेजेंट अच्छे, बट एल जीन दैट इज एसोसिएटेड विद द एक्स क्रोमोसोम, राइट. तो यू नो एल जीन टा केन कंडीशन रे अच्छे, आरो एक्स वाई क्रोमोसोम रे नाइ नो, दैट इज ओनली प्रेजेंट ओवर द एक्स क्रोमोसोम. So L gene टा ई केस रे भी एक्सप्रेस होबा, ई केस रे एक्सप्रेस होबा as well as ई केस रे भी एक्सप्रेस होबा, because here केन कंडीशन रे से होचे हेमीजाइगस कंडीशन रे होचे. हेमीजाइगस माने काना, हेमी रो माने हला हाफ, राइट. हियर हाफ ऑफ द क्रोमोसोम x और y दुइटा होमोलोगस क्रोमोसोम नु हन, बट x दुइटा x क्रोमोसोम देखला दुईटा होमोलोगस क्रोमोसोम, दुईटा पूरा सेम टू सेम क्रोमोसोम. ई केस रे दुईटा रिसेसिव एलील रहला जायकरी एल जीन एक्सप्रेस होबा, दैट इज योर होमोजाइगस कंडीशन बोली करी कहला. बट ई केस रे गुटे थरे भी जदी अच्छे रिसेसिव जीन से एक्सप्रेस हे पारसी, बिकॉज़ आरोटा तार होमोलोगस क्रोमोसोम नहे, एक्स और वाई क्रोमोसोम अलग अलग टाइप रो क्रोमोसोम. जदि एक्स वाई कंडीशन रे थिबा और एक्स क्रोमोसोम रे गोटे जीन टे रिसेसिव कंडीशन रे अछि, से केस रे से एक्सप्रेस हे पारुचे बेले ताके कोस में हेमीजाइगस कंडीशन, राइट. सो एल जीन हला काना, दैट इज योर लिथाल जीन एंड दिस इज ए रिसेसिव जीन, बट से केन कंडीशन रे एक्सप्रेस हे पारे, दैट में एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन और दैट में एक्सप्रेस इन हेमीजाइगस कंडीशन. एंड होमोजाइगस कंडीशन काना, हेमीजाइगस कंडीशन काना हमें बुझीगला. तापर देखो सी गला, एल गला, एंड नेक्स्ट असला हमर बी जीन. नेक्स्ट असला हमर केन जीन, दैट इज योर बी जीन. ClB ना, सी रो माने हला क्रॉसिंग ओवर सप्रेसर जीन, एल रो माने हला लिथाल जीन एंड बी रो माने हला बार आय जीन. This is B माने हला बार आय जीन. Okay, so बार आय जीन, बार आय रो माने हला very small आय.
bar I रो माने कण very small I, very small I. Okay, and this bar I gene also, that is your dominant gene. B gene, that is your dominant gene. Okay, bar I gene, that is dominant gene. माने जदि केनसी भी हमें गोटे जीन नला, राइट, सपोज C जीन, L जीन और B जीन नला, जदि B जीन अच्छे, जदि C L B तीन ही जीन अच्छे बोली हमें जन्मा केनता करी, सेतिर लगे हमें गोटे बार आई जीन नहीं छु. ओके, टिक्के गले और टिक्के डिटेल डिस्कशन करमा. B जीन दैट एक्ट एज मार्कर जीन, ये केन हिसाब में यूज है सी मार्कर जीन. ओके, बिकॉज हमको इनो काना करबार अच्छे गोटे क्रोमोजोम नंबर अच्छे, जिन क्रोमोजोम रे कि C जीन, L जीन और B जीन तीन ही टा नंबर अच्छे, राइट. ये काना करबा क्रॉसिंग ओवर नहीं ही दिए. ये जदी अच्छे होमोजाइगस या फिर हेमिजाइगस कंडीशन रे डेथ इज बाय इंडिविजुअल रो, एंड B जीन जदी अच्छे बोले दैट विल लीड्स टू बार आई. जदी हमें गोटे इंडिविजुअल रे से CLB क्रोमोजोम अच्छे कि नाइ न जन्मा केनता करी. जदी गोटे इंडिविजुअल रे भी हमें आर्टिफिशियली और एक्सपेरिमेंट जते बेले काम करू से टाइम रे गोटे क्रोमोजोम नेला CLB जीन थिला वाला क्रोमोजोम नेला, राइट. C जीन, L जीन, B जीन तीन ही जीन थिला वाला क्रोमोजोम नेला एंड गोटे इंडिविजुअल रे तर सेल रे पुट कला. तो से इंडिविजुअल रे CLB जीन अच्छे कि नाइ न और ई क्रोमोजोम अच्छे कि नाइ न हमें जन्मा केनता करी. जदि से इंडिविजुअल जेनु से नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेशन हबा, से इंडिविजुअल रो जदि आई टा बार आई हला, वेरी स्मॉल आई हला, देन वी कैन से दैट इंडिविजुअल हैव द CLB क्रोमोजोम. ओके, सेति लगे मार्कर जीन बोली करी कहूछु. मार्कर माने कान मार्किंग करूछि. जदि गोटे इंडिविजुअल रे नुआ इंडिविजुअल टा में नेक्स्ट जनरेशन बाहर करूछु एंड से इंडिविजुअल रे CLB क्रोमोजोम हमें आसीथिबा बोली करी एक्सपेक्ट करूछु, भाबुछु. बट हमको कंफर्म हबार अछि जे से इंडिविजुअल रे CLB क्रोमोजोम अच्छे कि नाइ न जन्मा केनता करी. जदि नेक्स्ट जनरेशन रे से इंडिविजुअल नेक्स्ट आसला सेतर आए जदि बार आए हला, ओके, सेतर आए जदि बार आए, एक्चुअली बार आए कहार कथा पड़ी छै, दैट इज ऑल अबाउट द ड्रोसोफिला. मन रखिथिबो CLB एक्सपेरिमेंट एक्चुअली कहार ऊपर करा जे, दैट इज ऑन द ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जाके हमें जैकपॉट ऑफ द जेनेटिक्स बोली करी कहसु, पढ़ितला आगरु, राइट. तो इनो L जीन, B जीन, C जीन, बार आई जीन कहार बार आए ड्रोसोफिला रो, राइट. सो दिस एक्ट एज मार्कर जीन. मार्कर जीन हिसाब से काम करबा, दैट मीन्स इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, it gives the information about the presence of CLB chromosome, presence of CLB chromosome. CLB chromosome गोटे सेल रे अच्छे कि नाइ न हमें जन्मा केते बेले जदि से इंडिविजुअल रो आयटा काना होचे बार आए. देखो मस्त बे आराम से डिस्कशन करमा, राइट. C काना जानी गला, L काना जानी गला एंड B काना हमें समझते जानी गला, राइट. एबे हमें जिमा एक्सपेरिमेंट भीतर के जिमा, राइट. ओके, एक्सपेरिमेंट इनो जन हमें एक्सपेरिमेंट डिस्कशन करूछु, दैट इज द डिटेक्शन ऑफ द म्यूटेशन by CLB method. CLB method actually यूज करा जैसे टू डिटेक्ट द म्यूटेशन इन X क्रोमोसोम. CLB method is used to detect
the mutation in X chromosome. X chromosome रे काना म्यूटेशन ହେଇचे कि नाही हे तत के डिटेक्ट करबार लगे मैं CLB मेथड के फॉलो करसु and ClB method that was first performed by a biologist ताकर ना हला मुलर ClB method was performed by के करिथिले that was performed by a biologist ताकर ना हला मुलर एस जे मुलर ओके ClB मेथड कहा के डिटेक्ट करबार लगे मैं यूज करू छु X क्रोमोसोम रे म्यूटेशन हेचे कि नाही ताके डिटेक्ट करबार लगे मैं यूज करू छु दैट इज योर ClB मेथड यूज करू छु राइट एंड इटर एक्सपेरिमेंट के करिथिले फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वाज परफॉर्म बाय एस जे मुलर एंड से कहा के नैथिले एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हिसाबे दैट इज योर ड्रोसोफिला ओके सो ही टुक ड्रोसोफिला देखो ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के नेले एंड तार ऊपर से एक्सपेरिमेंट कले राइट केनता के एक्सपेरिमेंट कले देखो तो पहला ये काना कले गुडे ड्रोसोफिला फीमेल नेले पहला तो से काना कले गुडे ClB क्रोमोसोम तैयारी कले एक्सपेरिमेंटली से काना कले गुडे बाहर गुडे ClB क्रोमोसोम तैयारी कले ओके कहार क्रोमोसोम नेले हमर ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर रो X क्रोमोसोम नेले he took one X chromosome नेले and make a ClB chromosome ओके ClB क्रोमोसोम गोटे तैयारी कले आर्टिफिशियली बट सेना X क्रोमोसोम के नहीं थिले कहार X क्रोमोसोम के ड्रोसोफिला रो X क्रोमोसोम के नहीं थिले एंड से X क्रोमोसोम रे केन केन जीन के पुट कले ClB जीन के पुट कले राइट तो गोटे फीमेल ड्रोसोफिला निया गला गोटे फीमेल ड्रोसोफिला निया गला एंड से फीमेल ड्रोसोफिला रे एबे काना अछि इटा X क्रोमोसोम and another X chromosome is there दुईटा X chromosome फीमेल माने दुईटा X chromosome अछि राइट तो सेनो से काना करले तार गुटे X chromosome रे काना नेले गुटे X chromosome रे नेले ClB gene right and our X chromosome is normal X chromosome बुझी पारला तो इना मोर ClB this one that is the female drosophila that is having X chromosome ClB X chromosome okay so he took one female drosophila having one ClB chromosome X chromosome टा ClB chromosome है and इता के क्रॉस करले आगुटे मेल ड्रोसोफिला संगे कहार संगे क्रॉस करा गला मेल ड्रोसोफिला संगे क्रॉस करा गला बट मेल ड्रोसोफिला जे नेले से मेल ड्रोसोफिला रो तर X क्रोमोसोम के काना करा जायतिला एक्सरे द्वारा एक्सपोज करा जायतिला ओके मेल ड्रोसोफिला रे काना थिबा X एंड Y क्रोमोसोम थिबा बट इनो जने X क्रोमोसोम नहीं थिले दिस X क्रोमोसोम this one that is X-ray eradicated okay this one that is exposed with X-ray इतके काना करा गला इतके X-ray द्वारा एक्सपोज करा जायतिला ओके तो इतर जन X क्रोमोसोम थिला this X क्रोमोसोम that is X-ray eradicated X क्रोमोसोम ओके इतर X क्रोमोसोम रे कहा के इराडिकेशन करा जायतिला एक्सरे एक्सपोज करा जायतिला बुझी पारलो तो काना करले गोटे फीमेल ड्रोसोफिला नेले where one X chromosome is having the ClB chromosome
and other is the normal X chromosome. And another male individual नेले and male रो X chromosome के कहार द्वारा expose करा गला X-ray द्वारा expose करा गला. देखो मैं first लिखी दूँ छे, right? तापरे हमें जिमा इतर भीतर के इधर नोट्स भी अच्छे हमार नोट सेक्शन रे हैंड रिटन नोट्स एंड मैं तुमको गोटे फोल्डर रे अपलोड करी छे. ओके म्यूटेशन पार्ट टा सेकंड जेनेटिक्स 2 जेन अछि जेनेटिक्स 2 रे डिटेक्शन ऑफ द म्यूटेशन बाय ClB मेथड पर नोट्स हैंड रिटन नोट्स अछि. यू कैन फॉलो दैट. बट हमें निजे भी लिखि परमा आराम से देखो जहां करूछु जहां पढुछु जस्ट लाइन बाय लाइन लिखले दैट विल बी योर वेरी गुड नोट्स, राइट? तो देखो इनो काना करला फास्ट the female Drosophila have one ClB chromosome and other is normal chromosome and other X chromosome is normal X chromosome. Other X chromosome is normal. गोटे के ClB X chromosome नेले. Okay, you know ClB X chromosome कर दो. One is ClB X chromosome and another one that is your, okay, let me rewrite this. गोटे ClB X chromosome नेले तार संगे ClB X chromosome and RX chromosome that is normal chromosome. Then he took male Drosophila whose X-ray X chromosome is whose X chromosome was eradicated or exposed माने ताके X-ray दिया गला. Okay, exposed with X-ray ताके X-ray दिया जाय ला का हेले दिया गला जे हमको जानवर अच्छे जे X-ray जदि हमें प्रोवाइड करूछु क्रोमोसोम के whether that X-ray may leads to mutation or not इथिर लागि करा जायतिला. why he exposed X-ray काहेले जे X-ray करा जायतिला काहेले जे X-ray द्वारा एक्सपोज करा जायतिला. X-ray was exposed. X-ray was exposed to know whether X-ray may leads to mutation or not. May leads to mutation or not. X-ray टा म्यूटेशन करी पारवा कि नाइ करी पारे. जेतले हमें म्यूटेशन पढितला डिफरेंट टाइप रो म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स पढितला जेथरे कि हमें रेडिएशन म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट रेडिएशन माने पढितला सेथना हमें डिस्कशन करथिला जे एक्स-रे गामा रे यूवी रे दे may leads to what they may leads to mutation. So here we have to check whether that X-ray may cause mutation or not by this ClB method. Right? So let's see here काना कले देखो तो ये दुईटा जन इंडिविजुअल नेले ये दुई इंडिविजुअल के क्रॉस करा गला. Okay, female Drosophila that is having one ClB chromosome, male Drosophila that is having X chromosome, but this X chromosome is X-ray eradicated. Right? That is having the X-ray that is exposed with the X-ray. Right? तो इमान को जेतेले क्रॉस करा गला इतरनो जेतेबेले फॉर्मेशन हला गैमेट दुईटा टाइप रो गैमेट फॉर्मेशन हला. One X chromosome and another gamete will having the another X chromosome, but this X chromosome is having the ClB. Right? And here इतरनो जेतेबेले गैमेट फॉर्मेशन हला दुईटा टाइप रो गैमेट फॉर्मेशन हला. One gamete may have X-ray exposed X chromosome and other one that is your Y chromosome. This is your male gametes. Right? इमान को जेतेबेला हमें क्रॉसिंग करोछु
राइट इमान को जितले हमें क्रॉसिंग करो लेट्स सी व्हाट विल हैपन यदि ई this female gamete fertilize with this male gamete ई female gamete ई male gamete संगे यदि fertilize करे हमें काना पाएमा हमको मिलबा this X chromosome right but ये X chromosome रे अच्छे ClB and याडू असला X chromosome this one that is X-ray exposed one right तो इनो जनी इंडिविजुअल फॉर्मेशन हला ई X क्रोमोसोम अच्छे इनो X-ray ClB अच्छे बट इटा काने एल जीन टा लिथल जीन है बट लिथल जीन केतेबल एक्सप्रेस हवा होमोजाइगस कंडीशन रे या फिर हेमिजाइगस कंडीशन रे तो ना इनो होमोजाइगस कंडीशन अच्छे ना हेमिजाइगस कंडीशन अच्छे लिथल जीन इज नॉट एक्सप्रेस इन हियर लिथल जीन एक्सप्रेस हवा के लिथल जीन केतेबेले लिथल जीन रो काम होला डेथ कराबा बट केतेले डेथ कराबा होमोजाइगस कंडीशन रे या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन रे बट इटा केन कंडीशन रे अछि इनो गुटे नो एल क्रोमोसोम अछि आरो एक्स क्रोमोसोम रे एल जीन अछि के ई एक्स क्रोमोसोम रे एल जीन अछि बट आरो एक्स क्रोमोसोम रे एल जीन अछि के नाइ नो आरो एक्स क्रोमोसोम रे एल जीन थिले जिकरी ता डेथ हितिता तो इटा काना हला दैट इज नॉर्मल फीमेल फॉर्मेशन ओके इनो फॉर्मेशन हला नॉर्मल फीमेल बट इतके जेतेले इतार संगे क्रॉस करा गला हमको काना मिलला देखो दिस वन दैट इज योर ClB इनो मिलला ClB एंड इनो असला Y क्रोमोसोम बट इनो जनी मेल फॉर्मेशन हला ई मेल के देखो ई मेल रे एल जीन टा केन कंडीशन रे छै हेमिजाइगस कंडीशन रे छै गुटे एक्स क्रोमोसोम छै आरोटा Y क्रोमोसोम छै राइट Y क्रोमोसोम रे तो एल जीन नहीं हमें तो इनो एल जीन केन कंडीशन रे एक्सप्रेस हे पारबा हेमिजाइगस कंडीशन रे एक्सप्रेस हे पारबा राइट एंड एल जीन जति एक्सप्रेस हला इंडिविजुअल रो काना डेथ हे जिबा सो दैट हियर अमर काना हला अमर जन मेल इंडिविजुअल रो काना हला डेथ हे गला मेल ड्रोसोफिला दैट डाई बिकॉज इनो एल जीन टा केन कंडीशन रे एक्सप्रेस हे पारबा हेमिजाइगस कंडीशन रे एक्सप्रेस हे पारबा राइट सो एल जीन एक्सप्रेस हला और सनो मेल इंडिविजुअल रो काना हला डेथ हे गला दुटा कंडीशन देखला यदि ई फीमेल गेमेटा ई मेल गेमेट संगे फर्टिलाइज करी थाए तो इनु हमर काना असला एक्स क्रोमोसोम राइट and this one that is your X-ray exposed X chromosome right तो इनो X-ray exposed वाला गुटे होचे नॉर्मल टा गुटे होचे बट इनो भी किछि प्रॉब्लम नै हुए X-ray ई क्रोमोसोम जदि डिफेक्ट भी आसे आरो क्रोमोसोम रे भी डिफेक्ट असले जेकरी हमर एक्सप्रेशन हबा म्यूटेशन टा बुझि पालो इनो जदि किछि म्यूटेशन हला किछि जदि डिफेक्ट भी आसी छि बट आरो एक्स क्रोमोसोम रे डिफेक्ट थिले जाई करी सना एक्सप्रेस हबा म्यूटेशन टा सो दैट हमर इनो एक्स क्रोमोसोम गुटे पूरा नॉर्मल आ गुटे काडा छै एक्स-रे एक्सपोज्ड छै राइट तो इटा भी देखा गला जे दिस वन इज आल्सो नॉर्मल फीमेल ई भी काडा हला नॉर्मल फीमेल हला बट इतर पाखे गुटे एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल टा छै आ गुटेटा एक्स-रे एक्सपोज्ड एक्स क्रोमोसोम अछि राइट तब रे जदि हमें इता के इतर संगे फर्टिलाइजेशन करामा काना चांसेस अछि इन असला एक्स क्रोमोसोम एन यडु असला Y क्रोमोसोम राइट this one is your normal X chromosome this one is your normal Y chromosome the normal male ही formation होगा so this will be your normal male okay normal male formation होला तो इटा में केन जनरेशन पाना this one that is your F1 generation तो F1 generation रे पूरे normal female
दुईटा नॉर्मल फीमेल गोटे मेल रो डेथ हे गला एंड अनदर वन दैट इज अ नॉर्मल मेल रो फॉर्मेशन हला तो ना 50% मेल रो डेथ हे गला ना दुईटा जदी चांसेस अछि ओके टोटल केतेटा मेल रो चांसेस अछि दुईटा मेल रो चांसेस अछि दुईटा पार्ट रो so one part of the male that will die and other part will survive right तो हमें मिलला हमको मिलला F1 जनरेशन F1 रो F2 जदी पैमा बेले हमें काना करमा गुटे F1 फीमेल के F1 मेल संगे फर्टिलाइजेशन करामा रिप्रोडक्शन करामा राइट तो नेक्स्ट काना कले मुलर देखो हमर जने F1 फीमेल अछि जहार पाके ClB क्रोमोसोम अछि इता के नेले एंड इता के इतर संगे फर्टिलाइजेशन कराले इतर संगे रिप्रोडक्शन कराले बुझी परलो तो फर्स्ट वन नॉर्मल फीमेल विथ ClB क्रोमोसोम दैट इज क्रॉस विथ नॉर्मल मेल इंडिविजुअल तो काना रिजल्ट मिलला देखो तापरे इन नेक्स्ट जनरेशन काना करले देन he crossed between कहार कार भीतर क्रॉस कराले F1 female with ClB chromosome F1 female with ClB X chromosome ओके ताके क्रॉस करा गला गोटे F1 मेल संगे क्रॉस करा गला F1 मेल एंड F1 मेल टा केनटा सर्वाइव करछे दिस वन इज ओनली सर्वाइव गुटे ना सर्वाइव करिछे इतर डेथ ही जाउछे ओके नहीं तो F1 मेल माने केनटा बुझमा इटा के ही बुझमा नॉर्मल X क्रोमोसोम नॉर्मल Y क्रोमोसोम तो नॉर्मल X क्रोमोसोम अछि इतर पाखे और नॉर्मल Y क्रोमोसोम अछि इतर पाखे देखो सब बेले मन रखिथबो X क्रोमोसोम इज लार्जर Y क्रोमोसोम इज स्मॉलर एते लगे मैं स्मॉलर साइज काटू छ Y क्रोमोसोम राइट एंड यू नो F1 फीमेल जेंथरे की गोटे X क्रोमोसोम टा काना है ClB एंड RX क्रोमोसोम टा काना है RX क्रोमोसोम टा एक्सरे इराडिकेटेड वाला है F1 रे देखो लास्ट जने क्रॉसिंग कला F1 रे जने पाइतिला दिस वन इज X गोटे नॉर्मल थिला बट इन ClB क्रोमोसोम थिला बट दिस वन दैट इज एक्सरे इराडिकेटेड राइट तो एबे दुईटा के जतले क्रॉस करमा इतर नो जन गैमेट फॉर्मेशन बा टू टाइप रो गैमेट फॉर्मेशन बा वन X क्रोमोसोम वाला गैमेट फॉर्मेशन बा अनदर X क्रोमोसोम वाला गैमेट फॉर्मेशन बा बट दिस X chromosome have the X-ray exposed, right? And here ClB gene are there, right? And इतरनो जितबेले gamete formation हवा दुईटा type रो gamete formation हवा. One, this one that is your X chromosome, and this one that is your Y chromosome. Okay? तो ई इतर संगे जितबेले fertilization कला काना आसला देखो. It a X chromosome and that one is your X chromosome and here ClB normal hava. This will be your normal female. Gote L ta you know gote L gene अच्छे but आर chromosome रे L gene नहीं नो दुईटा X section right तो you know L gene express ही नहीं पारे तो death नहीं हुए normal female हवा. But that female having the one ClB chromosome. यदि ई इतर संगे फर्टिलाइजेशन करे तो काना चांसेस अच्छे याडो असला ClB एंड सेडो असला Y क्रोमोसोम तो XY you know again देखो मेल रो डेथ हो जिबा बिकॉज़ you know L जीन टा हेमिजाइगस कंडीशन रे अच्छे तो you know मेल रो काना हवा डेथ हो जिबा मेल रो डेथ हो देन ई दुईटा जेतेले क्रॉस करा गला ओके हियर
this one and this one is X, this one is X, and here this X chromosome that is exposed with the X-ray. Okay, इन भी देखा गला जे this one that is your female and ये female टा भी survive करूचे, ये female टा भी that is living, ये female टा भी survive करूचे, बुझिएला. बट इनो आगुटे मेल जन फॉर्मेशन हला ये X क्रोमोसोम टा ये Y क्रोमोसोम संगे जते फर्टिलाइजेशन करला, this one that is your X chromosome that is exposed with the X-ray and इनो फॉर्मेशन हला Y क्रोमोसोम, X and Y chromosome. But देखा गला जे this male also die, ये male रो भी काना हे गला death हे गला, that means that is also not survive, ये male टा survive नहीं कला. तो इनु देखो जे देखमा इते ई काहन ले जे survive नहीं कला, because इनु जना पडुचे काना जे हमर जन X क्रोमोसोम अछि, this one that is your X-ray eradicated वाला है, इतरे काना एक्सपोज होइचे X-ray एंड X-ray एक्सपोज्ड हबार द्वारा ई X क्रोमोसोम रो जीन मानकर काना हिचे म्यूटेशन हिचे, जीन मानकर चेंजेस हे जाइचे. ओके, बट इनो आर X क्रोमोसोम तो नाही ना, दुईटा X क्रोमोसोम इनो देखो दुईटा X क्रोमोसोम अछि, गुटे खराब हे जाइचे बट आरटा ठीक अछि बोली करी फीमेल इंडिविजुअल टा पहुंची जाउचे. बट इनो जतले देखुछु आर X क्रोमोसोम तो नाही न, मेल पाके तो गुटे ना X क्रोमोसोम अछि ना, तो गुटे X क्रोमोसोम, one X chromosome that is totally defective because that is exposed with the X-ray and other one that is the Y chromosome. आ गुटे X chromosome थिता बेले हुए तो पहुंची जाइतिता, बट ना देखला जे आरटा तो Y chromosome है मेल केस रे, so that ये मेल इंडिविजुअल सर्वाइव नाही कला. तो इनु काना जणा पड़ला, here this one is not survive, that means X-ray is causing mutation, that means इनु काना जणा पड़ला जे हमर ई इंडिविजुअल रे काना हिचे म्यूटेशन हेइचे. केनथरे म्यूटेशन हिचे X क्रोमोसोम रे म्यूटेशन हिचे, बट आरो X क्रोमोसोम जदी थिता नॉर्मल X क्रोमोसोम जदी थिता बेले हे इंडिविजुअल रा सर्वाइव कर जेतिता, बट इटा काहार कथा पडिचे मेल इंडिविजुअल रो, एंड मेल इंडिविजुअल ओनली हैव one X chromosome and other chromosome is Y chromosome, right? So here from this he concluded that yes, X chromosome X-ray can cause mutation, right? So from this it is confirmed that the X-ray can cause mutation. From this he concluded that X-ray can cause mutation, can cause mutation. Okay, तो इनु जना पड़ला जे X-ray काना करि पारे म्यूटेशन करि पारे. दिस इज द ClB मेथड, वेरी सिंपल कांसेप्ट. जस्ट हमको दुईटा क्रॉस करबार अछि. ओके, पहला क्रॉस कला कहार भितरे क्रॉस कला, दैट इज फीमेल ड्रोसोफिला मेल ड्रोसोफिला, बट फीमेल ड्रोसोफिला रे ClB क्रोमोसोम गुटे नै गेला, आरटा नॉर्मल X क्रोमोसोम नै गेला, एंड आरथरे X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम अछि मेल टा, बट X क्रोमोसोम का मैं X-ray एक्सपोज कर दैछो, दैट रिजल्ट पाइला, राइट? देन इथरु जन पाइला नॉर्मल फीमेल जहार पाखे ClB क्रोमोसोम अछि सता के हमें क्रॉस कराला काहे के नॉर्मल मेल संगे क्रॉस कराला, एंड रिजल्ट पाइला काना नेक्स्ट जनरेशन रे मेल इंडिविजुअल दुहीटा डेथ, राइट? F1 जनरेशन रे गुटे मेल रो डेथ होतला, आरो मेल टा सर्वाइव करूतला, एंड सतार संगे हमें इनो क्रॉसिंग करैछो. बट F2 जनरेशन रे रेशियो केते आसुचे, ओनली फीमेल सर्वाइव करूचे, मेल रो डेथ हे जाउचे, एंड मेल रो डेथ रो कारण हला that is the exposed of the X-ray. X-ray cause mutation in the X chromosome so that other X chromosome is not there in case of your male individual. That's why the male individual die here, right? So this is the detection of the mutation by ClB method. I think समस्त भल से बुझी पारी थिबो. Okay, किछि भी डाउट हला you can write to us. हमर चैट बॉक्स सब बेले तमर मान कर लगी 24/7 ओपन अछि, तो संगे संगे हमर रिप्लाई ना आसे पारे, बट वेरी सून केते भी टाइम पर यू विल गेट द रिप्लाई. ओके, एंड आई थिंक यू ऑल एंजॉय दिस सेशन. ओके,
सो थैंक यू नेक्स्ट क्लास रे आउ किछि नुवा कांसेप्ट आमे डिस्कशन करबा